हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। मैं भी एक दिन वहां जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे दरवाजे बंद कर दिए, मेरे को जाने नहीं दिया। I feel that some of the elements, those who don't have any direct, indirect relationship with the farmers, they want to confuse the farmer agitation and farmer organization. Welcome back. It is day 20 of the Kisan Andolan, but with each passing day, the intensity of the protests is decreasing. Kisan Union leaders called for a one-day hunger strike on Monday, but it was a flop show, with netas taking center stage and giving the agitation a political color. A massive divide has been created among the Kisan leaders. 10 farmer union groups held a meeting with Agriculture Minister Narendra Tomar, extending their support for the farm laws. Meanwhile, activist Anna Hazare has threatened to resume his hunger strike if the government does not implement the recommendations of the MS Swaminathan Commission. अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कि कानून जब बनते हैं तो कुछ सोच समझ के कैसे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग हिस्से में क्या क्या तकलीफें हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उसके हिसाब से कानून बनते हैं। इन कानूनों के पीछे देश के 12-13 करोड़ किसानों का लाभ हो, उसके हिसाब से कानून बने हैं। अब अगर कोई आके बोले कि मैं कह रहा हूं ये कानून वापस ले लो और उसके अलावा मैं कोई चर्चा ही नहीं करूंगा, इसका क्या मतलब है? आखिर कानून में कुछ प्रावधान है, अगर किसी को कोई कुछ प्रावधान से तकलीफ है, सरकार खुले दिल खुले मन से चर्चा करने को तैयार है। Let's get you the pulse from ground zero. I'm joined by Prashasti from the Ghazipur border and Nitisha Kashyap live from the Singhu border. Good morning to both of you. Prashasti, I'll come to you first. Farmers are set to continue their agitation in the national capital region. What is the latest from ground zero? Well, absolutely, yes. Hello and good morning, Ayushman. And braving single-digit temperatures and biting cold, the farmers here making it very clear that they are adamant and they will continue their agitation. Moments back, we saw farmers bathing in icy cold water here. So the farmers now will have to endure the forces of nature as well. It's a single-digit temperature. The minimum temperatures have come down to single digits here, but the farmers nevertheless are continuing with their agitation. I'm bringing in some more pictures from Ghazipur border. We can see dispersed groups of farmers who are present here, but we found one very interesting element here, Ayushman, which I would like to bring into our conversation. You can see that how various groups of farmers have started merchandising the stuff from Bharatiya Kisan Union. We can see badges, we can see caps, we can see the posters, we can see mufflers and we can see flags. So we are seeing here that the farmers are in for the long haul. They are making it very clear. So you can see here how they've started merchandising stuff. So there are a number of things that you can see. Of course, the farmers here prepared for a long time. The farmers making it very clear that nothing short of a rollback will work for them. But now, of course, the biting cold making it difficult for farmers because it's very cold today and we are seeing how difficult it's getting for farmers as well. They are sleeping in these tractors and trolleys which we are showing you here. So you can imagine the plight of farmers here, but nevertheless, farmers making it very clear that we will continue our agitation. Well, interestingly, yesterday hunger strike was also observed here, but contrary to the expectation, we did witness the hunger strike diluting and the agitation also. The magnitude which was expected was not attained here, Ayushman. But nevertheless, the farmers are saying that we will continue our agitation. We are in for the long haul, and the only middle ground for us is the repeal of the contentious agrarian laws.
So that's the view coming in from the Ghazipur border by Prashasti. Now, speaking exclusively to Managing Editor Zakir Jacob, Union Minister Nitin Gadkari said that farmers should be wary of anti-social elements hijacking the agitation. Where exactly are the negotiations stuck, and why is a middle ground not possible? Or at least, certainly, we haven't seen one so far yet. I'm giving an example, my own. I have got organic farming and we are making vegetables. Okay. When we purchase it into the market, we have 8% we have to pay. Suppose we sell the vegetable of 1,000 rupees. 8% of 1,000, that is 80 rupees, is going to the trader, the bicholia. Yeah. Now I have decided to sell the vegetable because of this act into Pratap Nagar Chowk in Nagpur. We are selling our vegetable to Shetkari Bazaar, where we are getting 10 rupees more rate, and there is no trader's commission. Okay. So 100% it is going to benefit it to the farmer. So this is the act, and if suppose anyone want to sell it into Bazaar Samiti, Market Samiti, no problem, he can sell. But I am asking one question: is it not a right of a farmer to sell his product anywhere where he will get the highest rate? Absolutely. Of course. Exactly the law. What is the problem with it? No, so I wanted to get to this. I mean, even the last letter that the government had issued, there were about 20 points, 20 proposals that were made, whether it is on MSP, whether it is private mandis versus sarkari mandis, whether it is civil disputes, so on and so forth. It seemed like the government was willing to reach out more than halfway to the farmers, but then the farmers went back to square one and said, we are sticking to our demand. It's a one-point demand, and that is the law should be repealed. So are you somewhere worried that some vested interests are at play here? Some vested interests are sort of guiding the farmers on this, and that and thereby they are hijacking what started off as an apolitical sort of a movement? I feel that some of the element, those who don't have any direct, indirect relationship with the farmers, they want to confuse the farmer agitation and farmer organization. I feel that it is the appropriate time for farmers and farmer organization to take a previous measure and cautious about such element, which is very important. And this is what we are making. We are transparent. We are ready for discussion. Anywhere, if they convince us that this is the point which is not in this law, but which is beneficial to the farmer, we are ready to implement that. We don't have any problem. So that's the view coming in from Union Minister Nitin Gadkari, saying that there will be a no repeal of the three laws, but also maintaining that radicals seem to have hijacked this protest against the three farm laws. Let's get you a view from the Singhu border. I'm joined by Nitisha Kashyap, who's reporting live from the Singhu border. Nitisha, good morning. The farmer groups, are they determined to stay in the national capital region till these three laws are repealed? Well, yes, but as you said earlier that, the 10 farmer unions, they have already said that the new farm bill is in favor of the farmers. Mostly at Singhu border and Tikri border, the farmers who are sitting are from Punjab, and they are adamant that their demands should be met. It's the three farm bills should be taken back is what they are demanding, and for the last 20 days they are here. But what the Delhi police is saying is that they are, in fact, they have started the investigation into the FIR on the clash that happened between the farmers and the Delhi police on day one. They have also said that they have deployed massive security at Singhu border and Tikri border so that anti-social elements who are trying to hijack the protest should not create any law and order situation at these two borders. The Ghazipur border is mostly peaceful, and at Singhu and Tikri border, the Delhi police is saying that they do not want to take any risk of law and order because they have seen earlier at Tikri and Singhu how the clashes between the farmers and the Delhi police took place. Therefore, there is massive deployment at Singhu border. It's not just the local police, but also the crime branch officials and special cell officials have also been deployed so that, the profiling of antisocial elements could be done. Ayushman. So that's the view coming in from the Singhu border and the Ghazipur border. I want to thank Nitisha and Prashasti for joining us on the broadcast, for getting us the pulse from ground zero. Now, in an exclusive chat with CNN News 18, Union Law Minister Ravi Shankar Prasad said the farmer protests have now become a platform for radical elements to spread propaganda. One basic question.
that on one hand you're engaging with the farmers, and on the other the statements being made by you and your cabinet colleagues of those who are part of these protests are Khalistanis, they are ultra-leftist, and you have also said that they are part of Tukre Tukre gang. We have never said farmers are Khalistanis. The photographs of I don't want to name those people who are having serious charges of fomenting trouble to impinge upon India's sovereignty, security, integrity, who are in jail, whose bails have been rejected repeatedly from High Court to Supreme Court. They are being called intellectuals and they are sought to be freed from jail. Who is firing these shots from the shoulders of innocent farmers? Now, as the protests continue in the national capital region, they have not only affected those living in and around the city, but they have also hit industries hard, affecting the movement of labor and raw goods. Here is a report from Ground Zero. In the Kondli industrial area, the road blockades by protesting farmers has meant that goods are unable to go out of the factories. कि आज 15 से 16 दिन हो गए हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं एज अ इंडस्ट्रियल एरिया एंड एज अ फैक्ट्री ओनर. अभी हम कोरोना से किसी तरीके से बाहर ही निकले थे और कोरोना के इम्पैक्ट से किसी तरीके से वी वर सर्वाइविंग एंड सम वर्क हैड स्टार्टेड कमिंग इनटू द फैक्ट्री. नाउ द सिचुएशन इज लुकिंग इवन बैड. While goods are unable to get out of the factories, labor is unable to get in due to chakka jams and blocked borders. जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स का, इसकी वजह से हमारी जो कुंडली इंडस्ट्री एरिया के अंदर आने वाली जो रोड्स हैं और जो यहाँ से एग्जिट करने वाली रोड्स हैं वो सारी की सारी ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से ना तो हमें कोई भी रॉ मटेरियल कच्चा माल, उस कच्चे माल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए कंज्यूमेबल्स, फिनिश माल ना तो इनकमिंग हो रही है ना ही आउटगोइंग हो पा रही है. Owing to traffic jams, freight carriers or trucks transporting goods via Delhi NCR to other states have been taking alternate routes, leading to delays. रोज़ सुबह हाईवे से पार करके इधर फैक्ट्री के अंदर आते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है. हम फैक्ट्री वाले भी अपनी फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और रॉ मटेरियल्स आ नहीं रहे हैं, फिनिश गुड्स बाहर जा नहीं रहे हैं. Nearly 95% of the factories in the Kondli industrial area are facing losses due to the farmer protests. Neither raw material nor finished goods are getting transported in and out of the area. Bureau Report, CNN News 18. Shifting focus, Prime Minister Narendra Modi is set to visit his home state of Gujarat. He will be on a day-long visit to Dhordo in Kutch. The Prime Minister will lay the foundation stone for several development projects. These projects include a desalination plant, a hybrid renewable energy park, and a fully automated milk processing and packing plant. Prime Minister Modi will also undertake a visit to the White Ran of Kutch. Chief Minister of Gujarat, Vijay Rupani, will also be present at these events. Breaking news, Prime Minister Modi is likely to speak to Punjabi farmers who have settled in Kutch. Since 1965, Punjabi farmers have settled near the Gujarat-Pakistan border. After the war with Pakistan in 1965, the then Prime Minister Lal Bahadur Shastri requested farmers of Punjab to settle in Gujarat. So Prime Minister Modi will also be meeting farmers in Kutch and making a renewed pitch for those farm laws as the protests continue in the national capital region. But there is a tepid response now being received by those farmer groups that are protesting in the national capital region. But Prime Minister Modi hammering the reformist nature of those three laws, and he's likely to meet farmers in the Kutch region as he visits his home state of Gujarat. I'm joined by Janak Dave reporting from Kutch. Janak, good morning. प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए घर वापसी है और पूरे विजिट का उनका टोन उनके ब्रांड विकास पर है. बिल्कुल आयुष्मान, आज का जो दौरा है पीएम मोदी का वो बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बड़े प्रोजेक्ट का
भूमि पूजन करने वाले हैं। मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात करूं उसके पहले की कुछ खूबसूरत तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देता हूं कि दरअसल यहाँ जो रणोत्सव है वो यहाँ पर आने वाले हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ की। पीएम मोदी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान, उसमें रणोत्सव एक है। 2006 में मैं खुद विटनेस रहा हूँ। 2006 में जब इस रणोत्सव को पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जब इसको लॉन्च किया, तब शायद अंदाज़ा किसी को नहीं था कि रणोत्सव के नाम पे जो एक ब्रांड पीएम मोदी लॉन्च करने जा रहे हैं उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का मादा इस विज़न में है, वो शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था। और आप देख सकते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणोत्सव को एक नाम मिल चुका है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद अगर कोई याद करता है तो गुजरात का रण, कच्छ का रण याद करता है। तो सफ़ेद रण की चादर पूरी तरह बिछी हो और पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे शाम को। एक कल्चरल इवेंट भी है और उससे पहले 3 बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उस पर मैं जो आयुष्मान बात कर रहा था, उसमें सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट भारत पाकिस्तान सीमा से महज 6 किलोमीटर दूर। कोई इस इतने बड़े प्रोजेक्ट पे सोच सकता है, शायद ये इनके पीएम का ही विज़न है। यहाँ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में जो उनकी हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी में 30 गीगावाट की प्रोडक्शन की बात है कि अब 2023 तक यहाँ पर पहुँचे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम सौर ऊर्जा में और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में हम लोग कैसे आगे बढ़े उस दिशा में उनका ये विज़न को देखा जा रहा है। यहाँ पर बंजर ज़मीन है, जो रोज़गार की बात होती है वो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल पाएगा। तो बंजर ज़मीन में जब इस तरीके के प्रोजेक्ट लगते हैं तो आसपास के इलाकों में जो सरहदी इलाके हैं उनके गाँव में लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये सबसे बड़ा उनका विज़न है। और दूसरी एक आज अहम बात ये हो रही है आयुष्मान, जो आपने अभी अपने दर्शकों को बताई कि आज पंजाब के किसान जो यहाँ आकर बसे हैं 1965 से, उनसे मुलाकात करेंगे। अब तक जो 3 बड़े कानून को लेकर, फार्मर्स लॉ को लेकर जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश, जो बीजेपी सरकार का जो कहना है कि एक विपक्ष कोशिश कर रहा है भ्रम फैलाने की, तो उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश के तौर पे आज की इस मीटिंग को देखा जा रहा है। वो फार्मर जो एक समय 1965 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनको इन इलाकों में आकर बसाया था, अपील की थी और इस ज़मीन को, बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, उनको उस मेहनती किसानों ने फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। तो उन किसानों से मिलकर किसानों की समस्या को समझने की बात के तौर पर एक संदेश देने की बात है कि सरकार, इससे पहले भी दिल्ली में भी आपने देखा आयुष्मान की कई दौर में किसानों के साथ बैठकों का दौर चला, हालांकि वो बेनतीजा रही, और लेकिन एक सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। एक मैसेज, और वो भी खुद प्रधानमंत्री, तो ये एक मैसेज, बड़ा मैसेज देने की कोशिश आज यहाँ कच्छ से होगी, दिल्ली तक इसके संदेश ज़रूर पहुँचेगा। और साथ में जो अंतिम आज जो है वो इस गांव में, यहाँ पे जो पूरा इलाका है वहाँ पे खारा पानी मिलता है, सॉल्टी वाटर मिलता है, लोगों को तकलीफ़ होती है। तो डिसलिनेशन जो प्लांट है वो उसका आज भूमि पूजन होगा। वो 2023 तक तकरीबन यहाँ 30 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहाँ पर पीने के पानी की समस्या हल होगी। तो ये एक बड़ा तीनों प्रोजेक्ट हैं वो अपने आप में बहुत बड़े हैं और इसीलिए पीएम मोदी आज जो 5 घंटे का उनका प्लान है यहाँ पर आने का, तकरीबन 1 बजे आज यहाँ पर पीएम मोदी पहुँचेंगे और तकरीबन 7 बजे तक यहाँ पर आएंगे और 7 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आयुष्मान। Thank you, Janak, for joining us on the broadcast. Janak Dave reporting live from Kutch. Prime Minister Modi pushing the Vikas agenda in his home state of Gujarat and also likely to make a renewed pitch for the 3 farm laws. We're going to take a short break. More news and updates on the other side.